All right, a sensational revelation has been made by Bada Qabrastan, where Yakub Memon's grave is. Even as the politics plays out, a sensational revelation now coming in from the authorities. And this comes at a time when politics is playing out. There are some dirty secrets tumbling out, but I'm now speaking to two former members of the Bada Qabrastan Trust that manages the affairs of the graveyard. One of the trustees also saying that, talking about how Memon had been given a general grave initially. हमको उसने एप्लीकेशन लिख दिया जिसमें एप्लीकेशन में ये मेंशन किया है कि मुझे 17, 18, 19 नंबर की कब्र चाहिए, जो कि ये पहले से जनरल थी, इसके ऊपर दूसरी बॉडियां दफनाई जाती थी। तो हमने बोला हमने अलॉटमेंट नहीं करते क्योंकि ये इलीगल है। ऐसा इलीगल है, हम अलॉटमेंट नहीं करेंगे, ये हमारा बस में नहीं है। तो उसने क्या किया, हमारे पर हमको धमकी दिया कि मैं टाइगर मेमन का भाई हूँ, मैं तुमसे वो कर दूंगा और हमारे से फ़ोन पे बात कराने की कोशिश की। हमने बात नहीं की, हमने उसके खिलाफ एफआईआर की है एंटी करप्शन में। हमारे पास उसकी कॉपी है। उसी कब्र के सामने खड़े, वो डेट के पीछे इसी कब्र के सामने खड़े हैं, जिसके अंदर ना कोई काला मार्बल लगा है ना कोई पीला मार्बल लगा है। कौन से ईयर का डेट है? ये 2021 का। ये उनकी जबानी है। आपको चाहिए तो मैं इस वीडियो को आपके सेंड में देता। ये उनकी जबानी है कि ये मेरी जबानी नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर अभी न्यूज वाले को मामला करने के लिए उनकी चीजें अल्लाह सामने ला रहा है, तो उस चीज को वो गुमराह कर रहे हैं, वो चीज को वो गुमराह कर रहा है। जैसे कि ये देखो, ये लोग ने ऐसा बनाया। अब इसके अंदर मैं आपको पुरानी फोटो भी बताता हूँ। पुरानी फोटो भी बताता हूँ। ये पुरानी फोटो में कहीं ब्लैक मार्बल कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ब्लैक मार्बल। ये गुमराह करने के तो झूठ बोला जा रहा है। देखो कई ब्लैक मार्बल, ये एक मार्बल नहीं है, ये थी। इसको तोड़ के लोग ने जो है, और शायद से कि इनका प्लान है कि उसको अच्छी जो है वो मतलब बड़ी बनाने जाए, जिसके अंदर मेरा ऑब्जेक्शन है। इसीलिए कि हमने उनको ये कब्र अलाउट नहीं किया, और नहीं अलाउट करने का नतीजा ये कि हमने एफआईआर चीज़ें खाए। हमारा ये इसके अंदर हमारे ने इस चीज़ का करके। दूसरी बात ये है कि मैं आपको फिर एक चीज़ इसके ऊपर मैं आपको कोर्ट ऑर्डर पे लाऊंगा। कोर्ट ऑर्डर के अंदर ये चीज़ है कि सिंपल एक कोर्ट ने ऑर्डर दी है कि तुम इंडिविजुअल किसी को चीज़ें दे नहीं सकते हो, तो उसको तुमने मार्बल कैसा लगाने दिया, ये जनरल होना चाहिए। हाँ, अब ये जैसा मैंने एक न्यूज़ में सुना है, उन्होंने बताया कि 15 लोगों को उसमें दफन किए। तो 15 लोगों की लिस्ट मांग लो आप, उनमें उनके खानदान के ही लोग गए। 15 लोग, कोई 15 लोग की लिस्ट नहीं है। उसको चीज़ों को बढ़ाया गया है, झूठी चीज़ें चल रही है इसके अंदर बहुत सारे। हमने ना बीच में वक्फ बोर्ड को लिखा था, वक्फ बोर्ड को मैंने लेटर लिखा था, मेरे पास में लेटर की कॉपी भी है, जो आपको मैं फोटो प्रोवाइड कर दूंगा। जहाँ तक कि मेरे को डेट याद है, अगस्त 2020 में एफआईआर होने से पहले मैंने वक्फ बोर्ड को कंप्लेंट डाला था। वक्फ बोर्ड ने जो है इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। जिसको मेरी कॉपी रिसीव हुई थी, अनीस मेमन करके, उनको मेरी कॉपी रिसीव हुई थी, जिसके अंदर कोई अलॉटमेंट, कोई रिप्लाई हमारे को ना बुलाया गया ना कुछ। उसमें मैंने सारी डिटेल लिखा था, ये रिवेट का वगैरह ऐसा चीज़ें हो रही है। अब इनके ऊपर नाम आने लगा तो इन्होंने हमको झूठा फंसा के और अपने आप को सीधा करने की कोशिश की। अभी भी मैं फिर रिपीट करूँगा, इन्होंने ये झूठ बोला है कि उस पर ब्लैक मार्बल लगा था। कोई मार्बल नहीं लगा था। तुम सीसी वगैरह चेक कर सकते हो क्या उसके अंदर कब इसका काम हुआ। और आपको कभी पर्सनली टाइगर मेमन के नाम से थ्रेटन किया गया था? हाँ, जब वो रऊफ भाई जब हमारे पास में आते थे ना, तो उस वक्त थ्रेटन किया गया था कि लो भाई बात करेंगे। तो मैं बोला भाई मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और मैं उनसे बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। बोले तू भाई से बात कर ले वगैरह, क्योंकि मेरी एक मुमरा पुलिस स्टेशन में एक एनसीबी है, मैंने उनके खिलाफ एक चीज़ पे एनसीबी किया था। और मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, वो बहुत बड़े लोग हैं, इसके लिए मैं चीज़। ये जो करवाया गया वो थ्रेटन और पैसे के बलबूते पे कराया गया था? थ्रेटन और पैसे बलबूते पे कराया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जब मुझको इंक्वायरी के लिए बुलाएंगे तो मैं सारे पेपरों के साथ में आने के रेडी हूँ। मैं सारी इंक्वायरी के साथ पुलिस को सामने इंक्वायरी के लिए और एज अ विटनेस आने के लिए रेडी हूँ। आई एम कॉपरेट और रेडी हूँ भी हूँ, क्योंकि हमारे पर झूठा क्लेम किया गया है। क्योंकि सिंपल एक चीज़ ये है कि अगर वो बोलते हैं वो पुराना है, ये बना है, तो फिर वो टाइम पे जब 2020 में जब हमारे पे एफआईआर के, तो उस वक्त यही बात थी ना, 17, 18, 19 तुम हमारे को दे दो। जब भी तो ये ब्लैंक थी, मैंने आपको फोटो बताया, फिर अभी कैसा बना। तो ये ट्रस्टियान जो है उससे मिले हुए हैं, ट्रस्टियान सेव करें। अभी भी प्रॉब्लम ये है कि मैं कोई भी चीज़ें बोलूँगा ट्रस्टियान उनको सीधा करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें उनके हाथ है।
और चाबी भी टेक्निकलिटीज उनको पता है। सब सारी टेक्निकली उनको पता है। 11 ट्रस्टी है, उनके साथ में सारी चीजें उनको पता है। वो सारी चीजों को सही कर देंगे, फिर हमारे ऊपर क्लेम कुछ ना कुछ झूठा डाल देंगे, झूठे लोगों को खड़ा कर देंगे, झूठी रसीदें बना देंगे और बोल देंगे कि इन्होंने बनाए। तो उसको प्रूफ जो है कोर्ट में काफ़ी टाइम जाता है। और मेरे को आने वाले वक्त पे और अपने न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह इसका भी जो है फैसला होगा, क्योंकि हमने उनसे कोई पैसा नहीं लिया, अल्लाह जानता है। Going across to Arunil now. Arunil is joining us live. Arunil, it seems to be a long history of intimidation that was apparently used by the family there. Exactly how much time did it take? Because there have been authorities who are being blamed and challenged that is it the BMC, was it the then Aghadi government? Who exactly? Well, Amitabh, first it was the appalling story that Times Now broke, that how Yakub Memon, the convict in 1993 Bombay blast, his grave was being decorated and now curtains are tumbling out of the closet. Here, the two former trustees of Bada Qabrastan claiming that they were also being threatened by Tiger Memon. Tiger Memon, an accomplice of Dawood Ibrahim from the D gang, one of the main accused, in fact, convicts in the 1993 Bombay blast. Yakub Memon was the brother of Tiger Memon. So here, the underworld threat is being revealed by these former trustees. They also putting out some interesting aspects, saying that they had complained to the Waqf Board as well. The complaint was made in August 2020. Now, Waqf Board comes under the Minority Affairs Ministry of Maharashtra. Now, who was the minority minister? It was Nawab Malik. So, basically, why the Waqf Board, whether the Waqf Board held the Bada Qabrastan to glorify the qabr of Yakub Memon, that is the big question that arises. Or why didn't the Waqf Board inform the minority Arunil, affairs? stay on with us. We have Mr. Ram Kadam on the phone line with us. Mr. Ram Kadam, this is an exclusive Times Now news break. The trustees of the Bada Qabristan speaking about the kind of intimidation that they had faced for the grave of Yakub Memon. This is an extremely serious issue, and as we know that Honorable Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis ji already ordered for the probe, a detailed probe, and a very high-level IPS officer will conduct this probe, and all the facts will come in the picture. This is the first point. The point number two is now everyone knew that who was behind this. That time, Uddhav Thackeray was the chief minister, and under his leadership, several things happened. Like he made a minister who was involved with the Dawood aide, who is now in the jail. Another person who was asking that Yakub Memon should not be hanged till death. He wanted mercy for him. Uddhav Thackeray made him also a minister. Not only minister, he was the guardian minister for the town. So this all points, if you gather together, and whatever the things happened during his tenure as a chief minister, so he has to come forward with the folded hands, and he has to apologize to the nation. This is a very important thing. He is not accepting his mistake. Yesterday, his son, Aditya Thackeray, told that why his mortar email did not dispose in the sea. He did not read that court's order. Whatever was happened during Devendra was CM, that all was as per the court order. So now, even though he's in the graveyard, who has asked them to convert that tomb into the shrine? And that all happened when Uddhav Thackeray was there as a CM. So instead of accepting their own mistake, they have been pointing out. But Mr. Ram Kadam, whose mistake is it really? Because Devendra Fadnavis is now ordered for an inquiry. The police was there. They've removed the special lighting and everything that was done there. But what happens with the grave now? Will you let it be as it is now? Look, see, in our country, will not allow to decorate any terrorist grave. That is for sure. So definitely our government will take appropriate action. And as I told you, right from that tomb to converting into gradually a mazar, who did it?
when Uddhav Thackeray was the CM. That time it happened. He would have easily stopped it, but he did not. And one hand, the person who asked that Yakub Memon should not be hanged till death, he wanted mercy for him. The one, and Uddhav Thackeray made him minister. Another one is close to Daud, Ibrahim. So Uddhav Thackeray was surrounded with such kind of people, such kind of a minister, and his intention was not to stop this. So reason is very simple, for the appeasement. Okay, all right. Mr. Ramkadam, thank you for joining us. In fact, in the conversation with the trustees, they have also revealed an underworld link. They have said that they were intimidated and threatened by Yakub Memon's family members, and they raised a complaint, but nothing happened. Let's go back to Arunil on that. Arunil, this is a big charge by the trustees, former trustees of the Bada Qabrastan as well, who said that they were threatened. They also say that they had also filed a complaint. They had also raised objections to it, but nobody was there to listen to it, and they're saying they now feel scared that their entire version may be changed now because of political pressure. Well, that is right. In fact, the underworld link is being brutally exposed by these two former trustees. They are taking the name of Tiger Memon. Now, Tiger Memon is the key aide of Daud Ibrahim, the main person who orchestrated the 1993 Bombay blast. It was Tiger Memon along with Daud Ibrahim. Here the two former trustees are saying that the cousin of Yakub Memon told them कि तुम Tiger भाई से बात कर लो. That was a clear-cut threat that was being issued. They didn't budge under the pressure, but they fear that with the help of such threatening tactics, with the help of such money power, that the grave was given as a personal tomb to Yakub Memon, and then later on it was beautified. This is an extremely serious charge that is coming in from these two former trustees. They are also going to the extent of saying that we went and complained to the Waqf Board about these wrongdoings. Now, Waqf Board comes under the Minority Affairs Ministry. Minority Affairs Minister was Nawab Malik, who is at present in jail for his alleged. So is it politics of appeasement or more to it? Because the BJP raising questions, the Aghadi allies now in a way defending it, saying that politics that is being played out, why wasn't Yakub Memon dumped at the sea like previous terrorists have been by the United States, especially in the case of Osama bin Laden. For the moment, Arunil, thanks very much for joining in.